Okay, so we'll have the questions जो कि most frequently आपसे पूछे जाते हैं when you have your Viva exam during your practicals, ठीक है? So आपके practical में, as I've told you number of times earlier, कि practical में Viva जो है वो सबसे important चीज होती है एक तरह से आपकी, क्योंकि that is the impression जो आप external examiner के सामने देते हो, ठीक है? So it is very very important. So अब आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि what is the difference between drop table and truncate table command in SQL? Raise your hand. Yes, Abhishek. Ma'am, the difference between drop table command and truncate table command is that truncate uh, deletes both the deletes the table only, and drop means we can delete anything, both the thing, Both means what is the other thing? table and database. Table and database. Chaitanya? I think I said wrong, like मैंने उल्टा बोल दिया. नहीं. Truncate table, drop table. इसमें database तो कहीं है ही नहीं ना. So what is the difference between these two? Drop table, it deletes the all tables of the data All structure. tables. No, ma'am. One second. Drop table means we can delete the details, records, and truncate means both the structure and the records. अब आपने उल्टा बोल दिया. So अच्छा. अगर आप लिखते हो drop table student, that means you want to delete both the things, the data and the table of this table only which is mentioned. It's not going to delete all the tables. So drop table के साथ table का नाम आएगा drop table student, and it will delete both structure and data of the table. So your table is altogether deleted from the memory. Whereas truncate table को भी हम कैसे लिखते हैं? Truncate table, table का नाम, and it only deletes the data. So आपका data जो है वो सारा delete हो जाता है, but खाली table का structure memory में रहता है, which can be reused. आप उसमें दोबारा से data insert कर सकते हो, ठीक है? So that is the difference between the two. Okay. Another question for you is, what is the difference between alternate key and candidate key? Raise your hand for this. Piyush? Ma'am, candidate keys are those attributes which have the potential feature of becoming a primary key, and alternate key are those keys, the remaining candidate keys after selecting one, those and primary. Very good. So candidate keys are all those attributes which can be used as primary key. उसमें से जब हम एक को select कर लेते हैं, the remaining are called alternate keys. Okay. Next question is, how many primary keys we can have in a table? Ma'am, a single primary key. One primary key. So how many primary keys? There can be only one primary key in a table. So if I ask you how many primary keys are there, it's only one. Okay. What is the by default size of char if no size is given as a data type? If I write data type as char and I don't give any size in the brackets, so by default मैं उसमें कितने character store कर सकते हो? Yes, Chaitanya? One character. One character. Do we have any default limit like this for varchar also? No, ma'am. No, ma'am. No. For It's a varchar, variable. you have to specify the width. आपको उसमें width देनी पड़ती है round brackets में, लेकिन char में अगर हम round brackets में width नहीं देते हैं, so by default it's taken as 1. Okay. What is the difference between order by and group by statement? Difference between order by and group by. Order by arrange the data in ascending and descending order, Hmm? and group Ma'am, Ma'am, group by group by is arranges the the type of data group. having two or more than two identical rows in specific in groups. Okay, good. Anyone else wants to answer?
Yes, Chaitanya. Ma'am, in order by the data is arranged in ascending or descending order, whereas in group by data is classified into particular columns depending upon the conditions passed. Adiba, what would be your answer for this? Ma'am, I have told. You've told? Okay. So order by is सही बोला आपने, group by भी आपने सही बोला, but you can give an example along with that to explain it well. So you can say order by clause is used to arrange the data in increasing or decreasing order as per a specific column. For example, we can arrange the whole table data in increasing order as per the marks or decreasing order as per the marks of the student. Then group by is used to group the rows on the basis of similar values in a column. Okay, it is used to group the rows on the basis of identical or similar values in a column. For example, we can make different groups for different classes of students. Like class 12 students are in one group, class 11 students are in one group. So you can give example like that to give a better explanation to your answer. Okay? So order by and group by. तो जब आप ऐसा एग्जाम्पल साथ में बताते हो वाइवा में तो एग्जामिनर नोज कि इस बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि ये कहाँ पे यूज होता है. ठीक है. सो ऑलवेज जो डेफिनेशंस हैं इनकी वो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, बट अगर आप साथ में एग्जाम्पल दे दोगे योर आंसर बिकम्स परफेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो जैसे आपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली दिया कि सॉर्ट कर सकते हैं, क्लास के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय. ओके. नेम एनी टू numeric functions in SQL. Sum. Numeric function, individual row. IP students, CS के syllabus में नहीं है ये, but IP students. Round. Numeric. Round, हाँ. Mod. Mod. So round and mod. These are numeric functions. Okay. This is a repeated question. It is asked in your theory as well as practical exam a number of times. What is the difference between count and bracket में column का नाम and count and bracket में star? What is the difference between the two usages of count? Raise your hand for this. Raise your hand. Raise your hand. Kamaksh, you want to answer? Okay, Yes, Adiba, ma'am. answer this. Okay, Kamaksh, batao. I mean, when we have particular value in count bracket, it means that we have to count the number of values inputted in that particular table or whatever the thing is. And when we have star in the bracket, it means we have to count the particular thing from whole of the table. Example. Ma'am, for example, if when we have a particular value in brackets, Like, is मान लो आपके like, पास ma'am, student table है and I have yes, ma'am, we columns have like to count, admission number, name, class, section, marks. अब बताओ. ma'am, when we have to count, ma'am, for example, we have students from 12th A, 12th B, 12th C. And if I am searching for particular students who have got 95 marks, particularly 95 marks in any particular subject, then we will use a bracket, count bracket 95. And from any particular No. class section. नहीं बेटा. And Totally wrong. Python का count नहीं है, SQL है ये. Anyone else who wants to answer this? We don't write a value in count. हम एक value लिखते ही नहीं है. Count में column का नाम मैंने लिखा तो है. Count column name. Okay, Sresht. Sresht. Ma'am, when we do count column name, it includes a null value if present within the column. While in count star, the null values are only the null values are included which are present in all the columns in the same space. For example, I have 10 students in this table, and then I have records of those students. Out of this, if I write here section,
and I have sections like this, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, और फिर से ये है. So what will be the output of count section from student and what will be the output of count star? If I write Count section will count the number of rows involved in the section section column, and what count will be star the will, output? What will be the output as per the given table? ma'am, 1, 2, 3, 8. 8. Ma'am, 8 will be the 8, output. because it will not include the null Null value. values. And count star will give you, Ma'am, the total number 10. of rows in the table. that is 10. 10. So count star, इसका जो difference है वो ये है कि count star always gives us the cardinality of the table. That means it gives us the total number of rows in the table. फिर उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर नल है कहाँ पे नल नहीं है. अगर रो एग्जिस्ट करती है मतलब कम से कम एक कॉलम तो ऐसा होगा जिसमें वैल्यू होगी, तभी तो वो रो है. अगर किसी भी कॉलम में वैल्यू नहीं है पांचों में, दैट मीन्स वो रो ही नहीं एग्जिस्ट करती. तो इफ एनी वन ऑफ द कॉलम हैज अ वैल्यू, दैट मीन्स द रो एग्जिस्ट. और अगर रो एग्जिस्ट करती है तो आपके पास जो टोटल आएगा काउंट, दैट विल बी द नंबर ऑफ रोज, तो वो 10 आएगा. ठीक है, अभिषेक डोंट डू दिस. देन वी Sorry, हैव ma'am. एडमिशन नंबर. एडमिशन नंबर नहीं, सेक्शन. तो सेक्शन को जब आप काउंट कर रहे हो तो इसमें नल वैल्यूज है. तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो आप क्या डिफरेंस बताओगे? कि इफ वी राइट काउंट कॉलम नेम, कमाक्ष लिसन प्रॉपर्ली, काउंट column name, so it will count only the not null values given in the column. So count column name क्या करता है? Counts only the not null values given in the specific column. तो जो कॉलम का नाम हमने लिखा है उस कॉलम के अंदर जो नॉट नल वैल्यूज हैं वो सिर्फ उसको काउंट करेगा. Whereas count star always gives you the cardinality of the table, that is the total number of rows in the table. Clear? Is it clear to everyone? yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the difference between percentage and underscore while pattern matching? Raise your hand to answer this question. Okay, Abhishek can answer this. आपको जाना है ना इसके बाद? Answer this question. Yes, ma'am. Ma'am, the underscore means the exact one value, and the percentage means it can be more than one value, more than two Can it be values, or zero null. also? Yes, Or ma'am, null? it can be 0, I said. So it is exactly one unknown character. So when you're matching patterns, अगर आपके पास exactly one unknown character है, तो we use this. ठीक है? और दूसरा जो आपके पास है percentage. Percentage में क्या हो जाता है? Percentage is any number of. So it could be 0, it could be 1, more than 1. So any number of unknown characters. ठीक है? So आपको जब भी pattern matching करनी है हम use कर सकते हैं. अभिषेक के अलावा कोई और बताएगा? Which keyword is used for pattern matching? ये तो symbols हो गए, but keyword Ma'am, कौन like. सा use होता है? Like. मैम लाइक. What will be the command if I want कि मुझे वो सारे name show करो जिनके नाम में कहीं पर भी P आता है? I want to show all those students Ma'am, जिनके P. नाम में letter P है कहीं पर भी. Ma'am, select star from. Ma'am, table का नाम. Table name. टेबल का Where नाम, ठीक name. है. Where name like percentage. P percentage. Very good. So where name, like, percentage, P, percentage. So percentage, P, percentage means P can be the first letter, it can be the last letter, it can be anywhere in between. ठीक है. Very good. Fine. Okay. Next question. If I have a command which says select star from student where marks greater than equal to 70 and marks less than equal to 90. ठीक है? Now I have three commands over here. ठीक है? Select star from student same है, मैं सिर्फ where लिख रही हूँ. आप मुझे बताना कौन सा where same result देगा जो ऊपर वाली command देगी. So where marks between 70 to 90, where marks between
70 and 90, where marks in 70, 90. So which command out of these three will have the same result as the above query? Who will answer? Ma'am, second option. Yes, ma'am, second. Everyone agrees to this? Yes, ma'am. Second. Yes. Yes, it is second option. So where marks between 70 and 90. So between का purpose क्या होता है? It takes both the sides inclusive, greater than equal to है, less than equal to है. So between means both sides are inclusive और इसके बीच में जितनी भी values हैं वो भी सब included होती हैं. ठीक है? अच्छा, now who will tell me कि ये जो last condition है where marks in 70, 90 इसका क्या मतलब है? Ma'am, it means that the marks can be, it works like or. It can be in 70 or 90. So it means like marks is equal to 70 or marks is equal to 90. 90. 90. Okay. Now let's say I have two tables with me. मेरे पास एक टेबल है M जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, उसकी जॉब है और उसका डिपार्टमेंट आईडी है. So like employee ID is 101, 102, 103, 104 like this. We have some names over here. We have some jobs. Something like that. Then I have department IDs like this. I have another table called department. अब इसके अंदर मेरे पास department ID है और department का नाम है. So department ID is 10, which is, let's say, record keeping. And this is accounts department. Let's say these two departments are there. Now, raise your hand and tell me what should be the primary key of both the tables, and in which table do we have foreign key and what is the name of the foreign key? Yes, anyone? Piyush and who else has raised hand? Abhishek. Bas, Baki? Adiba, answer the question. Ma'am, in table EMP, that is employee table, here employee ID is primary key, and in Okay. department, debt ID is serving as foreign key, which is primary key of department table as well as serving as foreign key for employee table. So it's primary key in this, but it is serving as a foreign key over here, which helps you to establish a relation with this. Okay. Fine. Thank you. Good. Now I write a query. I write select name, comma D name from M, comma department. What will it create? Ma'am, it will What? create Cartesian product. Very good. It will create Cartesian product. And how many rows I'll get in the result? Ma'am, 8, I guess. 8. So 4 multiplied by 2. Number of rows in the first table multiplied by number of rows in the second table. So first row में इसमें 4 rows हैं तो इसमें ABC will be matched with record keeping. तो आपका output आएगा ABC record keeping, ABC accounts, XYZ record keeping, XYZ accounts, PQR record keeping, PQR accounts, LMN record keeping, LMN accounts, right? So I don't want that. तो मैंने इसके साथ यहाँ पर लगा दिया where what? M dot dept ID is equal to department dot dept ID. Now I get a proper result. It shows ABC. ABC के साथ record keeping match करता है तो वो दिखाएगा ABC के साथ record keeping. XYZ के साथ 20 वाला match करता है तो accounts, PQR के साथ भी accounts, LMN के साथ भी accounts. So I get it like that. ठीक है? इस चीज को हम क्या कहते हैं? Is it a natural join or is it an equi-join? Ma'am, Ma'am, it is natural join. equi-join. Ma'am, it is equal. Equi-join. It is equi-join. जिसने equi-join बोला है उनका आंसर सही है. It is an
इक्वी ज्वाइन, जब आप इक्वालिटी की कंडीशन स्पेसिफाई करके ज्वाइन कर रहे होते हो, देन इट इज इक्वी ज्वाइन, इट्स दैट सिंपल, है ना? तो ये तो याद रखने में कभी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन होता ही नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड की हेल्प से है, बिना कीवर्ड के वो होता ही नहीं है। अगर आपको ये सेम रिजल्ट चाहिए और आप ये क्वेरी नेचुरल ज्वाइन से लिखना चाहते हो, so it will be select name comma d name from m natural join डिपार्टमेंट। बट इसके लिए ये जरूरी है कि दोनों टेबल में जो कॉलम का नाम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे भी डेप्थ आईडी है, यहाँ पे भी डेप्थ आईडी। अगर नाम डिफरेंट है तो इक्वी ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म नहीं होगा। सो नेचुरल ज्वाइन के लिए इट इज कंपल्सरी दैट द नेम हैज टू बी सेम इन बोथ द टेबल्स, तभी उसको पता चलता है कि किसको लिंक करना है। मैम सो आउटपुट नेचुरल में क्या ज्वाइन में डिफरेंस होगा इन दोनों कोई में? डिफरेंस नहीं होगा, सेम आउटपुट। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नेचुरल जॉइन है, कौन सा इक्वी जॉइन है? क्वेरी देख के रिजल्ट तो दोनों का सेम है, अच्छा, ओके मैम। रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। अब आपकी चॉइस है एज अ प्रोग्रामर, आप दोनों में से कौन सी क्वेरी लिखना चाहते हो। सो अगर आपको पेपर में भी आता है कि आप शो करो नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, तो आप दोनों में से कोई भी क्वेरी लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? बट अगर आपसे डिफरेंस पूछते हैं कि नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल जॉइन में वी यूज द कीवर्ड नेचुरल जॉइन, वी राइट सेलेक्ट नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट, वेयर एज इक्वी जॉइन में वी हैव टू fetch from both the tables and give the condition of equality। दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है कि नेचुरल जॉइन में दोनों में कॉलम का नाम सेम होना जरूरी है, इक्वी जॉइन में नाम सेम नहीं भी होता तो भी हमने कंडीशन तो देनी ही थी, तो जो भी नाम होगा उस पर कंडीशन दे देंगे एंड इट विल मैच अकॉर्डिंगली, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। सो दोनों तरीकों का रिजल्ट सेम आएगा, बट दोनों का नाम अलग है, और आपको पता होना चाहिए कि किस मेथड में क्वेरी कैसे लिखी जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इक्वी जॉइन। वाइवा में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? तो अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है? तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड टेबल। और अगर हमने स्टार लगाकर फेच किया है, सिलेक्ट स्टार करके, अगर तो आप सिलेक्ट और फिर लिख ही रहे होगी नेम कॉमा डी नेम, तो ऑब्वियसली दो कॉलम्स फेच होंगे। पर अगर आपने स्टार लगाया है तो आपकी डिग्री क्या होगी? सो डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? इट विल बी number of columns in first table plus number of columns in second table. So number of columns in first table plus number of columns in सेकेंड टेबल। तो जितने आपके पास पहले टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, लाइक पहले में हमारे पास 4 थे, दूसरे में 2 थे, तो आपके पास 6 इसकी डिग्री हो जाएगी। सो डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ रोज। फाइन, ओके। नाउ इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? Yes, ma'am. What is domain of an attribute? And Domain, domain is the possible set of values for a specific column. For very example, good. when it comes to age, so age can be Hmm. number, so that is why the domain for age can be from 0 to 9. So domain of an attribute is possible set of values for a particular column. तो एक column में क्या क्या possible values आ सकती है? So possible set of values for a specific column जो है आपके पास, that is said to be domain of an attribute. ठीक है? So possible set of values for a specific column is domain of an attribute. For example, जैसे बोला कि आपके पास age है, अब एज भी डिपेंड करती है। देखो, अगर एम्प्लॉय की एज है तो हम कहते हैं कि भाई 25 ईयर्स का एम्प्लॉय हम लेते हैं एंड 60 ईयर्स तक ही हो सकता है। सो एन एम्प्लॉय कैन बी having an age which can be a number between 25 to 60। अगर स्टूडेंट की एज ले रहे हैं तो that can be 3 years to 20 years in a school। कॉलेज के स्टूडेंट की एज का अलग डोमेन हो जाएगा। सो एज भी अलग अलग डिपेंड करती है कि किसकी है, एंड वी हैव अ कंस्ट्रेंट कॉल्ड चेक, जिसकी हेल्प से हम डोमेन को दे सकते हैं कि जो चीज मैच करेगी चेक से वही एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। अब मैंने कंस्ट्रेंट वर्ड यूज किया, तो बता दो व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल? Ma'am, constraint are the restrictions which we add in table.
Very Example, good. unique primary key. So constraints are the restrictions which you impose on the columns of a table. कई बुक्स में प्राइमरी की को कंस्ट्रेंट नहीं कहते, वो कहते हैं प्राइमरी की अलग ही फीचर होता है, बट प्राइमरी की इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ कंस्ट्रेंट, क्योंकि इसमें अगर आपने किसी चीज को प्राइमरी की दे दिया तो ना तो वो ब्लैंक छोड़ी जा सकती है और ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। बट अलग अलग से ये दोनों कंडीशन देने के लिए वी हैव नॉट नल एंड unique. So not null means can't have duplicate value, sorry, can't have blank value. Unique means can't have duplicate value. Check से हम condition दे सकते हैं. What is the purpose of default? What is the purpose And of default? default function is if you don't enter the value for a column, so by default it will take the value that is specified in the Very query. good. So we can give a value with default while creating a table, ताकि जब हम insert करें और हम उस column की value insert ना करें due to any reason, so instead of having null, it will have the value which we have given with the default constraint. जैसे कि आपने section by default A कर दिया कि अगर किसी बच्चे का section insert होता ही नहीं है तो by default उसको section A दे दो, something like that. So that is the purpose of default. Okay. मैम Now, हाँ जी, मैम मैं अब लीव कर सकता हूँ? yes, अभिषेक. ओके मैम. Okay. Okay, now we have some specific questions जो कि SQL और Python से हैं, but only specific to IP students. So you can, CS students can just listen over, ठीक है? And IP students will answer. अगर आपको आता है तो आप भी answer कर सकते हो CS वाले students जो हैं. Excuse me, What ma'am. will, हाँ जी, Ma'am, before you have questions related to IP, ma'am, have you read the message that I've sent you personally on WhatsApp? today? Yes, ma'am. No, I haven't. Ma'am, That one I actually, read that you should upload the previous classes on the app also. So that I'll do. After no, that I no. have, nahi. After that, actually, it was related to a project. Acha. What is Okay, your so project? that can be anything as per my choice. Teacher has given so lately, so I have to choose any topic. So the only request is, can you provide me the easiest one so that I can answer related all the question? हाँ, आप एक Like, काम करना. I have the first class of Viva which we had ना. So in that we have explained a few projects कि अगर ये project है तो कैसे explain करोगे and all. And I've shared few projects in the group. I'll share it once again. Choose any one of those. I'll tell you how to explain that. So everything is easy. कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है. So choose whichever topic you like. Submit that and I'll tell you how to explain that. ma'am, but still I haven't made the project. That's the point. That's okay. I'll explain you that project. What is happening, how it is happening. I'll explain you everything out of it. Don't worry. Okay, ma'am. I'm along with like what are the things that I'm required to write in the project and all that. Everything what can be asked from the project, I'll explain you. So don't have to worry about that. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yes. What will be the output of this? Sresht? Yes, ma'am. Ma'am, What double will be L. the output? Double L. IP में से भी कौन बचा? सिर्फ श्रेष्ठ है. Only श्रेष्ठ. अच्छा. श्रेष्ठ आप वैसे ही फिर आंसर कर दो 2-3 क्वेश्चन then I'll ask CS वाले students से. Okay, tell Yes, ma'am. me. What is the purpose of drop function in pandas? Ma'am, drop function is used to delete a table along with its data. Pandas पूछा है मैंने. Drop in pandas, not in SQL. Python pandas. So you have to be very careful while answering the questions कि question data frame में से है या SQL में से है. Data frame में drop का क्या use होता है? And delete the data frame with the data. No, it is used to delete a specific row or a column. Drop data frame में किस लिए use करते हैं? It is used to delete a specific row or a column. आपको उसका index बताना पड़ता है. So if you want to delete a row or a column, how would you write? You'll write df.drop and then you will give the row index. Let's say row index is B.
and by default x is 0 होता है, मतलब हम रो को ही डिलीट करते हैं, and if you want the changes to be permanent you have to write in place is equal to true. So this will delete a row with index b, और अगर वैसा इंडेक्स कोई है नहीं तो एरर आ जाएगा. So this will delete a row with index b. और अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? You have to write x's is equal to 1. By default, drop is used to delete only the rows. So अगर हमें column delete करना है तो x's is equal to 1 लिखना पड़ता है. याद आया कुछ? Yes, ma'am. And what are the other two methods to delete a column? Ma'am, to delete a column. Hmm. पीयूष को पता है? डेटा फ्रेम में से पीयूष? शायद अल्टर होगा, शायद. नहीं. If I have to delete column 3, the other option is I can write del df col 3. So it will delete the column 3 from the data frame. Or I can write df dot pop bracket में col 3. So it will delete the column 3 and return the same as well. So pop, del, drop तीनों के थ्रू आप कॉलम डिलीट कर सकते हो, whereas रो को डिलीट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, that is drop. Difference between series and data frames, Srisht? Yes, ma'am. Ma'am, series is one-dimensional, whereas data frame is two-dimensional. Series contains data in only in form of the vertical arrangement of single data values, whereas a data frame contains it in form of rows and columns. और Ma'am, a series is data mutable but size immutable, whereas data frame is data and size mutable. and the other one would be ये series homogeneous होती है और data frame heterogeneous होता है. मतलब series में all values are supposed to be of same data type, whereas in data frame we have multiple columns and the columns can be of different data types. Good. ठीक है, तो that is it for you, Shrestha, for today. ठीक है, just revise Python more. SQL तो ठीक है, Python का थोड़ा आप revise करो. And now Yes, I'll ma'am. ask the questions for CS students. So IP students, if you want to listen, you can stay. If you want to leave, you can leave. Right? Thank you, ma'am. Okay. Okay, now the question is differentiate between W and W plus mode of opening a file. Yes, raise your hands. What is the difference between W and W plus? Yes, Piyush. मैम राइट मोड में, मतलब W मोड में हम राइट कर सकते हैं फाइल में, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो मतलब वो फाइल बना देता, अगर फाइल फाइल क्रिएट. एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल बना देता है. ठीक है, और W यस मैम. प्लस में? मैम W प्लस में हम रीड एज वेल एज राइट दोनों कर सकते और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हैं. मैम इसमें फाइल बन जाएगी. उसमें भी फाइल बन जाएगी. वेरी गुड. सो फर्क सिर्फ इतना होता है कि W और W प्लस में आपके पास W मींस राइट कर सकते हैं, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू बन जाती है, एग्जिस्ट करती है तो पुराना कंटेंट इरेज हो जाता है और एक न्यू ब्लैंक फाइल आपको मिलती है. बस W प्लस में ये हो जाएगा कि आप उसमें से रीड भी कर सकते हो राइट के साथ साथ. तो जो आपने अभी राइट किया उसी को आप रीड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको फाइल पॉइंटर को आगे पीछे करना पड़ेगा. तो विच फंक्शन इज यूज्ड टू मूव द फाइल पॉइंटर इन अ फाइल? मैम सीक. Seek. Okay, which function is used to tell where the file pointer is? टेल. Tell. अब seek में हम दो चीजें देते हैं, एक होता है offset और एक होता है reference point. Right? Offset is the byte number, कहाँ जाना है, और byte number कह लो या number of bytes कह लो, where do you want to go? Reference point में क्या possible options होती हैं? 0, Is 1 any and 2. 0, 1 and 2? What does it stand for? मैम बिगनिंग, करंट एंड एंड. Beginning, current, and end. So if you have to move from the beginning, we give 0. By default is 0. If you don't specify anything, then also it is taken as 0 only. And current का मतलब है जहां पर फाइल पॉइंटर अभी है वहां से आपको मूव करना है. तो इसके साथ हम पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं,
नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, आगे जाना है तो पॉजिटिव, पीछे जाना है तो नेगेटिव, और इसके साथ सिर्फ पॉजिटिव ही होती है क्योंकि आप आगे ही जा सकते हो बिगिनिंग से, पीछे तो जा नहीं सकते। और अगर आपको एंड से कुछ कैरेक्टर्स पीछे आना है तो आप नेगेटिव ऑफसेट दोगे और यहाँ पर दोगे 2। सो इफ आई राइट f.seek -5, 2, that means we have to reach to the 5th last character in the 5, तो वो एंड से 5 कैरेक्टर्स पीछे आ जाए। ठीक है, सो 0, 1, 2, so this is what you have to remember about reference point. Okay, what is the difference between parameter and argument? Difference between parameter and argument. Yes, Chaitanya. Ma'am, parameters are those variables or values that are passed in the function header, whereas arguments are passed through the function call, which contains the values that are to be stored in the parameter variables. Very good. The only thing is the first line which you said was parameters are used, yeah, are the arguments which are passed. It's not passed where we receive. So it is received. So parameters are the variables in the function header where we receive the values, and argument are the variables which we use to pass the values during a function call. So arguments की value pass होती है, parameters में value receive होती है, ठीक है? So example, def, अगर आपने कुछ भी लिया है, let's say greatest, और यहाँ पर आपने लिया है A, B, C, so these three are parameters. यहाँ पर कोड है जहां से आप इसको कॉल कर रहे हो, एंड वहां से आप जो भी पास कर रहे हो, whether they are variables or values, so those are arguments. So header में जो है वो parameter है, call में जो है वो arguments है. Okay, what is overflow situation in stack? Yes, anyone else except Chaitanya? What is overflow and underflow situation in stack? Okay, but yeah, speak Chaitanya. Ma'am, in the overflow condition, when stack is of fixed size, then if any extra element is tried to be pushed into the stack, then overflow condition is. So if your stack is of fixed size and it is already full and we try to push an element, so obviously it cannot be added. So that generates an overflow situation. Okay, underflow. And in underflow, if the stack is empty and we try to pop an element, then the underflow situation will be. Very good. So when stack is full and we try to add new element, it is overflow. And underflow is when stack is empty and we try to delete something. Piyush, what is the basic principle of stack? Family form. Full form. Last in, first out. Which list function is used in the push operation? Append. Which list function is used in the pop operation? Pop. Very good. Okay. Now, tell me the output of this code. Yes, who will tell me the output of this code? Ma'am, the output would be H, L, O, 1 and 3. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Speak. So it's basically printing the
alternate characters. So alternate characters ये हो गए because we have step as 2. Okay, Ayush बताएगा difference between split and partition function used with strings. Ma'am, in partition, the uh, the list we can put the value and it's give only three elements in tuple form, and in Very good. yeah, split it gives these many how much the value it is Depending upon inserted कि आप or किस character by default on which character we split. ma'am space. Space. अच्छा मैंने अगर लिखा है a dot partition am तो ये string के लिए क्या आंसर आएगा? Ma'am, it's I am and a programmer in So I tuple. space am then space a programmer in tuple. ठीक है. और अगर मैंने a dot split लिखा होता तो Ma'am, it's I am a programmer in square मतलब in list. good. Okay. What is the output of a dot is alpha for the same string? Ma'am, I am a it's programmer. just If I write a dot is alpha, what will be ma'am, the output? it's just check whether it is alphabet or not. तो क्या देगा? True या false? It's true. Piyush, is it correct? Ma'am, No, ma'am. क्या आएगा फिर? Ma'am, false है. क्यों? Ma'am, space भी है ना. क्योंकि स्पेस भी है. ठीक है, तो इज अल्फा का मतलब है सिर्फ अल्फाबेट्स ही होने चाहिए, नथिंग एल्स. सो इसके बीच में स्पेस भी है, इसलिए ये आपको फॉल्स देगा बिकॉज इट्स नॉट ओनली अल्फाबेट्स, देयर इज सम अदर कैरेक्टर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिंबल इन पाइथन? Ma'am, it's a power. Power. Okay, what will be the output of ma'am, 9. पूरा तो लिखने दो. अब बता. Ma'am, 512. 512 पहले क्या सॉल्व होगा? 2 रेज टू द पावर 3 या 3 रेज टू द पावर 2? Ma'am, it goes right to left. सो एक के बाद एक पावर है, सो इट विल बी दिस 512. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंड और ऑपरेटर्स, और ये किस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स में आते हैं? Ma'am, व्हाट इज द कैटेगरी? क्या कहते हैं इसको? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल हैं, लॉजिकल हैं, कौन से ऑपरेटर्स हैं? Ma'am, logical ma'am, relation. So these are logical operators. And what is the purpose of these operators? Ma'am, or means union and means intersection. Mean. मैथ्स में नहीं पूछ रही, पाइथन में पूछ रही. Ma'am, when we use and, both the situations should be true, and when we use or, any one of the situation can be true. Very good. So condition बोल देंगे situation की जगह. So we will say that when we use and, we need both conditions to be true. So जो दोनों conditions है वो true होनी चाहिए, तभी and का overall result true आएगा. And और में कोई भी एक condition true होगी तो overall result true आएगा. Okay. What is Ma'am, the I have a output? doubt. हाँ जी. मैम एक बोलिए. क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट और ऑपरेटर हैज अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस? फर्स्ट इज प्लस इक्वल्स टू, एंड सेकंड इज डबल स्टार, थर्ड वन इज एंड फोर्थ वन इज ये परसेंटेज. देखो जब डबल स्टार आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, उसकी मैम प्रेसिडेंस बट सबसे, एंड वो तो सबसे लास्ट में जाके होता है. सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर आपके पास डबल स्टार होता है, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये होते हैं, फिर प्लस माइनस,
फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद जाकर होता है नॉट, फिर एंड, फिर और. दिस इज द लेवल ऑफ प्रेसिडेंस. उसके बाद असाइनमेंट आते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू एंड ऑल. $85. Now I print len of A. What will be printed? Ma'am, 5. Ma'am, 5. Ma'am, 5? Yes, 5 या ma'am. 4? 5. 4, ma'am. 4. मैम लेन है ना? हाँ, पर आपने एक चीज देखी इसमें, राहुल 2 बार है. Can I Okay. have the same key twice? No, ma'am. No. No, ma'am. If I have it like this, तो राहुल के मार्क्स चेंज होकर 85 हो जाएंगे. तो आपकी जो डिक्शनरी बनेगी इसमें, उसमें राहुल के मार्क्स होंगे 85, then you'll have करण, पीयूष एंड रोहन. So आपकी जो लेंथ है वो 4 आएगी. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वाले में से ही वाइवा में पूछा जा सकता है. आपको 11th वाले जो बेसिक्स है उसमें से भी वाइवा में पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रिटन एग्जाम. तो आपको डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपको लूप्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं. लाइक आई कैन आस्क यू व्हिच ऑफ द 2 लूप्स इज एन ऑटो इंक्रीमेंट लूप. बताओ. For loop. Ma'am, for. और Ma'am, लूप. 4. सो फॉर लूप इज ऑटो इंक्रीमेंट लूप क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज होता है अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं. तो व्हाइल में अपने आप से कुछ इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है. सो आपको कंडीशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ एल्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. और ऐसा तो है नहीं कि थियोरी एग्जाम में मैं 11th वाला नहीं पढ़ना, थियोरी में भी पढ़ना ही है. सो everything which you write you should know to speak also. That is the only thing. तो वाइवा में बेसिकली पूछेंगे तो सिलेबस में से ही. तो जो चीज आपको लिखनी आती है वो आपको बोलनी भी आनी चाहिए. बस ये है कि पूरे बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे. आउटपुट क्वेश्चंस छोटे छोटे पूछ सकते हैं क्योंकि दे जस्ट हैव वन शीट और उसी टाइम पे लिख के पूछेंगे. तो इट्स यूजुअली अ वेरी स्मॉल कोड जिसका आउटपुट आपसे पूछ सकते हैं, बट नॉट बिग कोड्स एज यू गेट इन द एग्जाम. ठीक है. सो यू शुड नो अबाउट ऑल द फंक्शंस वी यूज, ऑल द फाइल मोड्स वी हैव. आपके फंक्शंस में सारे ये जितने भी हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, कितनी वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं which you must remember, which you must revise, and you should be confident at the time of answering. अगर आपको कोई भी डेफिनेशन अपनी सही से नहीं लगती है, आपको खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस डेफिनेशन को बोलने में, तो ऑलवेज सपोर्ट इट विद एन एग्जाम्पल. तो अगर आप साथ में एग्जाम्पल देते हो सही से, तो अपने आप आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है. ठीक है. बट बी कॉन्फिडेंट एंड बिल्कुल काम रह के अपना जो भी आपको आता है उसका आंसर आप देंगे. और ट्राई टू गिव द आंसर इन इंग्लिश. नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हिंदी में दो, लेकिन आंसर सही देना है. ठीक है. बाकी तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा जो आपको लगे कि क्या पूछ लिया. बट जितना हो सके इस क्लास में भी बोल के आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप आंसर दोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है. ठीक है. सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं.